Good afternoon, everyone. So my name is Chetan. I'm operations with AlgoBulls. Today we are going to have a webinar with Mr. Yash Mehta. Yash Mehta is a trader who and an investor who's been in the stock market for the past 7 years, and he's got a lot of investing as well as trading experience. He's primarily into Nifty options as an option seller. So he's got a strategy which he's going to show and present to us on with AlgoBulls in this webinar. So over to you, Mr. Yash. Hello everyone. Good afternoon. First of all, just want to know, am I audible right now or? Yes, you are audible. Yeah, perfect. So, hello everyone. So today I will be covering about the systematic trading and managing your risk using option selling strategy. So before starting with the presentation, I just want to know by what language will you prefer, like Hindi or English? So if the team can help me with this. आई थिंक वी शुड कीप इट अ मिक्स ऑफ बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश रखते हैं एवरीवन सबको कंफर्टेबल हो जाएगा. ठीक है, understood. So we will continue in Hindi and English both. So I have created a short presentation जो which will discuss more about the strategy and उसके बाद the team will help to understand the statistics behind it. So let's start with the presentation. So about myself, so I am Yash Mehta from Mumbai and मैंने अपना MBA फाइनेंस में किया है from JBIMS. उसके पहले I did my BTech in electronics engineering from VJTI and recently I cleared my CFA level 2. Also I have cleared NISM series 8 and series 15 exam as well. So I have an experience of over 7 years in trading and investing. I have been active in market since 2015. Also, primarily, I am a positional trader, but I do option trading to generate regular active income from the market. So more on option trading side, I do only option selling and I don't do option buying. So आगे PPT में I will explain the reason why I do option selling and not option buying as well. उसके बाद also I have a founder of Finquity where we are continuously curating blogs and जो भी stock market related content है we are sharing it on our website as well. So let's begin, guys. So what are options basically? So I will be covering about the basics as well, so that majority audience को भी समझे कि options क्या है, कि हम लोग option selling क्यों कर रहे हैं, what is our strategy and why are we doing that, and what is the benefit of the strategies that we are using. So first is what is the option? So basically जो options है, it is a financial derivative जो कि that gives buyer the right but not the obligation to buy or sell an underlying asset. So basically there are two types of options, call options and put options. So call option is basically for the bull and put option is basically for the bear. I'm considering for the long side as well. So there are wide range of option strategies that are designed for hedging income or speculations as well. So in options there are many opportunities to profit with option traders, but traders have to carefully weigh the risk. So basically in options one can lose easily as well because it is a leverage instrument. Leverage का मतलब है कि जहाँ पे आप ₹1 देके you are trading for ₹5 or ₹6. So that is why the options are called as the leverage instrument as well. So talking about the basic of options, तो अगर हमारे पास basically दो views होते हैं, either bullish or bearish. So for bullish views there are two strategies. So basically a bullish trader can basically buy a call जो कि फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ट है ऊपर वो दिखा रहा है एंड उसका जो पे ऑफ है वो भी है. सेकंड थिंग इज द ट्रेडर कैन शॉर्ट पुट ऑप्शन एज वेल. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू इज बेसिकली जो कॉल बायर है इट हैज द पोटेंशियल टू फॉर इनफाइनाइट प्रॉफिट बट जो लॉस है वो लिमिटेड है. एंड फॉर पुट शॉर्ट ट्रेडर वहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट का लिमिट है दैट इज लिमिटेड बट जो लॉस इट इज अनडिफाइंड और इनफाइनाइट इन दिस केस. So this is about the bullish trader. The second is basically the bearish trader. So जो bearish trader है, the trader can basically long put जहाँ पे उसका जो profit है it is undefined and जो loss है that is restricted to the premium जो उसने pay किया है to buy the put option. And जो call option short है, जो call short है, so उसके अंदर the traders का जो profit है that is defined and जो loss है it is undefined because अगर market put short call short में अगर market ऊपर जाता है देन जो कॉल शॉर्ट में जो लॉस है इट इज अनडिफाइंड बिकॉज उसका जो पोटेंशियल है इट इज द स्टॉक कैन गो एट एनीवेयर. So that's why the loss is undefined in case of the call short.
सो दिस इज बेसिकली बेसिक्स ऑफ ऑप्शन जो हम लोग करते हैं, पुट बाय, कॉल बाय, पुट शॉर्ट एंड कॉल शॉर्ट. सो नाउ कमिंग अहेड, सो बेसिकली वन ऑफ द क्रिक्स जो हम लोग ऑप्शंस में फोकस करते हैं, दैट इज थीटा डीके. एंड थीटा डीके इज बेसिकली कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड वो थ्रू आउट द डे भी होता है. ऐसे नहीं कि आप अगर ऑप्शन को ओवरनाइट शॉर्ट करोगे, नेक्स्ट डे थीटा डीके होकर प्रीमियम कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बट इट विल हैपन थ्रू आउट द डे. सो अगर हम थीटा डीके का चार्ट भी यहाँ पे देखें, तो बेसिकली जो एटीएम ऑप्शन है उसके अंदर जो टाइम वैल्यू जो थीटा डीके है, इट इज मैक्सिमम. देन जो ओटीएम ऑप्शन है इसमें थोड़ा मीडियम है, एंड इन आईटीएम ऑप्शन इट इज द लीस्ट, बिकॉज आईटीएम ऑप्शन में देर इज सम इंट्रिंसिक वैल्यू एसोसिएटेड विद द प्रीमियम. एंड जो एडिशनल प्रीमियम है, दैट इज बेसिकली द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम्स. So how do we define this basically ATM, OTM and ITM? So let's say Nifty is at 16,290. तो जो नियरेस्ट स्ट्राइक रहेगा इसका जो विच इज 16,300, तो दैट विल बिकम ATM स्ट्राइक फॉर निफ्टी. नाउ कमिंग ऑन टू द कॉल ऑप्शन, सो बेसिकली 16,300 के नीचे जो भी स्ट्राइक है, दैट इज ITM ऑप्शंस. So for example 16,200, 16,100 is basically ITM option, and whatever strike above 16,300 is basically OTM. So 16,400, 500, 600 will be the OTM options. But for the put side it is exactly reverse. So put side पे जो 16,300 का strike है, it is ATM, and उसके ऊपर के जो भी strike है, which is 16,400, 500 and 600, that is basically ITM options. And whatever options below 16,300, which is basically 16,200 or 16,100, so those options are basically OTM options for this put options. So considering theta decay as well, जो हमारे strategy है, it is revolving around ATM strike or near ATM strike, where we get maximum opportunity or benefit of the theta decay. So this is one of the framework while creating the strategy. The next part is why I choose option selling and not option buying. So we will discuss briefly about this part. So basically, for option buyer, the probability of winning is only 1/3, and this I will explain with the example as well. So for option buyer, the only thing that matters is the trend, and which means that if there is an option call buyer, so the trader will win only if market is in momentum and it is in strong uptrend. If market is sideways or if it is going down, then possibly the premiums in the option will decay and it will become zero, and the call buyer will lose. The second is जो पुट बायर है, the put buyer will win only जब भी मार्केट मोमेंटम में है and it is in downtrend. So if market is sideways or if market is in uptrend, then put buyer will lose. So out of three conditions, like the direction in favor or sideways or direction against the favor, तो only in favor जो option buyer है वो win करता है, and that's why the probability is 1/3 for option buyer. But in case of option seller, so जब भी ट्रेंड ऑप्शन सेलर के फेवर में नहीं रहेगा, एट दैट टाइम ओनली द ऑप्शन सेलर विल विन. सो विच मीन्स जो कॉल सेलर है, इट विल ही विल द ट्रेडर विल विन ओनली इफ मार्केट इज साइडवेज और इफ इट मार्केट इज गोइंग डाउन. एंड फॉर पुट सेलर, द ट्रेडर विल विन जब भी मार्केट साइडवेज है या फिर इट इज गोइंग अप. सो यहाँ पे दो कंडीशन है आउट ऑफ 3. सो दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन ऑप्शन सेलिंग साइड इज 2/3 compared to the option buying side, which is 1/3. So we are making the situation favorable for us. That's why we have choose option selling and not option buying. Coming on to the next slide. Uh, so what instruments and what asset class we will trade? So basically हम trade करेंगे Nifty weekly options. Second is we will trade only intraday, and the reason to choose intraday is basically जो overnight risk होता है gap up gap down का, वो बहुत कम रहता है. एंड इंट्राडे में हमारे जो भी ट्रेड्स है, इट विल बी ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, जहाँ पे आप एक्टिव रह सकते हो, एंड यू कैन एग्जीक्यूट द ऑर्डर, यू कैन एग्जिट द ऑर्डर एज वेल अगर स्टॉप लॉस आपका हिट होता है. एंड पॉसिबली जो बड़े बड़े रिस्क है, जो कि गैप अप गैप डाउन जो हमने मार्च 2020 में देखा था, तो वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इन इंट्राडे. द थर्ड इज जो हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे वो हमारे सिस्टम में फिक्स रहेंगे आफ्टर वी एंटर आर ट्रेड. एंड द बेनिफिट ऑफ दिस इज बेसिकली जो थीटा डीके है एंड जो ट्रेंड है, we will be benefited only if theta decay is there and trend is on our side. Initially we don't keep any target, but we trail our stop loss aggressively in our case, so that जो हमारा रिस्क है वो कम होता जाए, and the profit जो है we basically we will let market
give us the reward जितना भी market जितना भी हमें मिलना चाहिए. So that's why we are not keeping any target profits or anything in intraday. अब तक कुछ डाउट है क्या किसी को तो दे कैन आस्क. और am I very fast? परफेक्ट. इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स, आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, आप लोग चैट में डाल सकते हो. विल बी ग्लैड टू आंसर दोस क्वेश्चंस एज वेल. Sure. So I will continue ahead. So basically, right now, if we choose, if we are shorting options in intraday and we are shorting basically call and put options, so what market trend will favor us? So there are four cases right now. The first one is the uptrend. It will be less favorable for us बिकॉज जब भी हम कॉल और पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे एंड मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में है तो देर इज अ हाई चांस कि हमारा जो कॉल का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा एंड जो पुट की जो पोजीशन है वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे थ्रू आउट द डे, तो उसके अंदर हमें प्रीमियम्स मिल सकते हैं. द सेकंड केस इज डाउन ट्रेंड. अगेन इट इज लेस फेवरेबल बिकॉज अगर मार्केट इज गोइंग डाउन इन इंट्राडे वन वन डायरेक्शन है देन हमारे जो पुट का स्टॉप लॉस है वो एग्जिट हिट होकर वी विल बी एग्जिटिंग आवर पोजीशन. बट जो कॉल साइड पे हमारी ओपन पोजीशन है दैट विल बी गिविंग अस अ गुड प्रॉफिट एज वेल. The highly favorable condition is the third condition. So let's say market is sideways and it is not moving anywhere. So throughout the day we will be getting a considerable theta decay as well, and हमारे जो position है it will be giving us good profit also. And the last case, which is the kangaroo market, or which is the violent move as we have seen in last Thursday as well, when market went till 16,900 and then it went till 15,900 and then जब मार्केट 16,200 तक चला गया था, तो इट इज़ अ वायलेंट मूव. एंड इस केस में आई हैव मॉडिफाइड दिस स्ट्रेटेजी एज वेल सो दैट वी आर नॉट, यहाँ पे बेसिकली जो लॉस होता था वो हमारा बहुत ज़्यादा होता था. लेट्स से मार्केट थर्सडे मार्केट है और मार्केट निफ्टी इज गोइंग फ्रॉम 15,000 16,150 टू 15,900, तो तब हमारा पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता था. देन अगेन मार्केट वेंट अप फ्रॉम 16,900 टू 16,200, तब हमारा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाता था. तो वी विल बी हैविंग टू स्टॉप लॉस हिट इन अ ट्रेड एंड तब हमारा जो लॉस था वो बहुत ज़्यादा होता था उस केस में. बट नाउ वी हैव मॉडिफाइड आर स्ट्रेटेजी वेयर जब मार्केट इज वेरी वायलेंट एंड हमारा एक स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है देन वी आर मूविंग द स्टॉप लॉस ऑफ सेकंड पोजीशन एट कॉस्ट. तो जहाँ पे हमारा सेकंड पोजीशन का स्टॉप लॉस अगर कॉस्ट पे रहेगा तो वी विल बी हैविंग फेसिंग लेस लॉस इन दैट केस. सो बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो आपको समझ जाएगा कि हमारा जो एवरेज लॉस है इन ईच ट्रेड वो बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ दैट. एंड ऑल्सो AlgoBulls बैक टेस्टिंग have helped me a lot to modify the strategy. So the fourth case, which is the kangaroo market, is basically unfavorable for us. So this is the four conditions right now for market. Now coming to the benefit of using this strategy. So basically जो trader है the trader has to remain active for only 5 minutes during market opening and market closing. जो हमारे stop loss order है it will be in the system as well. And अगर हमारा कोई SL hit नहीं होता है then at time we have to close all the trades during the market closing, preferably at 3 p.m. or 3:10 p.m. And basically I am not a full-time, so I am a part-time. So basically this is highly suitable for part-time traders and as well full-time traders as well to generate active returns with less efforts. So this is why we have designed this strategy, and I am using this for the last 2 years in my own personal trading account. So this is the benefit of जो भी strategy हम of using this strategy. So now we are open for Q&A and thank you. So I will hand it over to the moderators right now. Well, thank you very much, Mr. Yash. So yes, this strategy is available on our marketplace right now, which I'm just going to share my screen and show you the strategy as well. Okay, so this is the strategy for Mr. Yash. जो strategy already marketplace पे available है. You guys can just directly ये जो link है यहाँ पे, ये link में आपको
आपके चैट में यहाँ पे डाल दूंगा ताकि सो दैट यू कैन लुक एट द स्ट्रैटेजी डायरेक्टली। तो ये है उनका स्ट्रैटेजी, जहाँ पे इन्होंने स्ट्रैटेजी कोड है STRT 062। ट्रांजैक्शन फीस इज समथिंग विच इज अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। द स्ट्रैटेजी का कैपिटल रिक्वायरमेंट है 2200, आई एम सॉरी 2 लाख रुपीज। Hit ratio of the strategy is 66.88, which is excellent, I think, Mr. Yash. Am I correct? Yes, yes. So basically, that's what I have said. In option selling, we have a probability of two-third. So it is near two-third probability as well. Correct. यहाँ पे स्ट्रैटेजी का ROI भी है, इन टर्म्स ऑफ द ROI which is generated. Obviously, this is the one of the safest strategy available on the marketplace. So your risk appetite is very limited based on that. Here you can see more details about the strategy, the gross profit that the strategy has generated. Here we also have the information about the heat map, about कौन से दिन पे strategy ने ज़्यादा प्रॉफिट दिया था, कौन से दिन पे ज़्यादा लॉस दिया था। यस जी, आप थोड़ा आपके स्ट्रैटेजी के स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? आपका स्टॉप लॉस कैसे होता है इस स्ट्रैटेजी में? Uh, okay, so basically, in the morning, we will be initiating जो भी short strangle है in options. So ATM ओके। plus one strike away, we will be selling the full call and put options. So let's say हमारे जो options का premium है, it is 100 rupees on call side and 100 rupees on the put side. So I'm considering ये hypothetical case है अभी right now. So हमारा जो stop loss रहेगा, so let's say we have executed our order at around 9:16 or 9:17 a.m. So ओके। immediately हमारा जो stop loss रहेगा, it will be added in the system, and for both the side, so individually we will set 50%, like 1.5 times the premium that we have shorted. So call side पे let's assume हमने 100 रुपीज़ पे कॉल शॉर्ट किया है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, इट विल बी नियर 150 और 151, थोड़ा बफर लेके चलेंगे हम. And on the put side as well, it is 100 plus 50%, which is 150 or 151. So that will be our initial stop loss. But again, we have modified this system, and just want to thanks AlgoBulls teams as well to help us modify this setup. So now, right now, we are aggressively trailing our stop loss. And जो हमारा initial stop loss है 150, 151, हम वो नहीं रखेंगे, but we will be updating our stop loss on the lowest premium, जो भी करंट प्रीमियम है, इनटू द 50%. सो लेट्स से 100 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन इज नाउ 80 रुपीज़. सो वी विल सेट 50% ऑफ दैट प्रीमियम. सो 120 रुपीज़ का प्रीमियम स्टॉप लॉस रहेगा. बट जो भी पुट साइड पे अगर प्रीमियम बढ़ता भी रहेगा, तो देन वी विल कीप द सेम स्टॉप लॉस. हम लोग 150 से ऊपर नहीं जाएंगे. तो दिस इज हाउ वी आर एग्रेसिवली ट्रेलिंग आर स्टॉप लॉस. एंड लेट्स से कॉल साइड, लेट्स से अगर पुट साइड पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड वी आर एग्जिटिंग आर पोजीशन, तो हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा उस केस में. बट जो कॉल साइड पे प्रीमियम से, तो उसका स्टॉप लॉस विल बी एग्रेसिवली ट्रेल्ड, सो दैट हमारा जो लॉस है वो मिनिमल हो जाएगा, अगर इन केस कॉल साइड पे भी स्टॉप लॉस हमारा हिट होता रहेगा तो. सो ऑन एन एवरेज यू विल सी द लॉस इज वेरी लेस इन दिस केस, एंड विच इज हार्डली 1 to 2% ऑफ द मार्जिन दैट वी आर यूजिंग. So the statistics will show the data, right? Like the moderator will show the data. Correct. Thank you very much, Mr. Yash, for explaining the information about the strategy. So हाँ, additionally ये strategy के बारे में जितना भी information है वो सब कुछ हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, अमाउंट और कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो यस, यहाँ पे स्ट्रैटेजी पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 2 लाख रुपीज इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट ये स्ट्रैटेजी पे। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे रिक्वायरमेंट है। यस, यू कैन डू एडजस्टमेंट्स एज क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट हाईली यश जी का रिकमेंडेशन भी वही रहेगा कि ये स्ट्रैटेजी जैसा है बेस्ट फिट करके, द बेस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट करके ये स्ट्रैटेजी बनेगी। यस, यू कैन मेक चेंजेस आपकी मर्जी के हिसाब से, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस वुड गिव यू द बेस्ट काइंड ऑफ रिजल्ट व्हिच इज अवेलेबल। And I want to add one more point. Can I? यस, गो अहेड, गो अहेड। Okay, so basically जो strategy है, it is designed for primarily designed for the part-time traders, and because I am also a part-time trader, so that's why I know the real pain, and even the part-time trader have to generate the returns as well. So यहाँ पे अगर हम देखें, तो we have to remain, अगर we are using AlgoBulls, then their platform will do all the thing, and हमारा जो time investment है, it is hardly 5 to 10 minutes in a day. वेरेज जो फुल टाइम ट्रेडर है, जो 6 to 6.5 आवर्स स्क्रीन के सामने बैठता है, स्टिल इफ यू आर जनरेटिंग अराउंड 50 to 60% रिटर्न इन अ ईयर, दैट इज मच बेटर देन लाइक वी आर हैविंग अदर वर्क एज वेल.
तो अगर हम लोग एडिशनली थोड़ा अल्फा जनरेट कर रहे हैं ऑन आर कैपिटल, then that is much better case for a part-time trader as well. So that's why this strategy is created considering the part-time trader perspective, but even full-time traders can can allocate certain capital to this strategy so that it can this strategy can work in the backend itself. You don't have to like track it or manually, or you have to invest time in it. So considering return on investment, that it will be decent, but return on time will be very high in this case, because we are only investing 10 to 15 minutes or 5 minutes in a day. So that's why the return on time is very high in this case. Absolutely, and also it makes a lot of difference कि आपने strategy start कर दी and the computer is taking care of everything, because there's no chances of where you lose a track of it, you forgot about it, आप कुछ अलग काम से आप बाहर निकले, आप कंप्यूटर पे नहीं थे, you went to get a cup of coffee, यही चीज सिचुएशन में कभी कभी स्टॉप लॉस ओवरहेड हो जाता है। आप स्टॉप लॉस डाल देते हैं, बट अगर आप भूल गए डालना या आपसे रह गया बिकॉज ऑफ फॉर एक्स वाई जी रीजन, यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली डाल देता है, तो दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। एब्सोल्युटली राइट। Yes, yes. Yes, so if anyone has questions, yes, definitely you can put it on the chat. We'll be glad to help you with anything. So yes, जी, question है, can you also add a hedge position to reduce the capital requirement? So I will suggest not to use hedge and all. Basically, what happens is, like let's say I am using 2 lakh capital for one lot each on call and put side. But if I'm hedging this position, then possibly I can use 5 lots or 6 lots. So in that case, although our profit will be 5 to 6 times, but the loss will be 5 to 6 times as well, and that will be bring us closer to blowing up our account. So that's why I'm suggesting not to use any sort of hedge, and use 2 lakh capital for one lot in call and one lot in put. So don't over leverage yourself. Market will take no time to kick you out. So that's why I will suggest not to use less capital. Great, thank you for the explanation. There's another question. Is AlgoBulls connected with the ICICI Direct? Yes, we are already working upon it. It should be available soon. आप क्वेश्चन चैट में डाल सकते हो, आपको कुछ भी पूछना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी। आपको ऑलरेडी लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं हमने स्ट्रेटेजी के। आई विल ऐड इट वंस अगेन चैट में। यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द स्ट्रेटेजी एज पर योर कन्वीनियंस एज वेल। For people who joined in a little bit late, you can look at the strategy by clicking on the link. You'll directly open the strategy on the marketplace. Yes, AlgoBulls works with Phoenicia. Mr. Harish, you can definitely register on our website, or you can call our support line. Our team will be glad to help you understand how our system works and any questions that you have related to our marketplace, including the charges as well. Unfortunately, sir, we do not support Paytm money right now. Mr. Yash, do you wish to explain anything else about your strategy? So basically, we have considered 4 cases, market cases as well. जैसे कि uptrend, downtrend, then there is basically what we say sideways or the kangaroo market. So this strategy has its own advantages and disadvantages as well. The major advantage is when there is a certain event, जब भी let's say RBI की policy meet है या फिर कुछ finance minister अगर आ रहे हैं for conference,
सो एट दैट टाइम जो विक्स रहेगा इट विल शूट अप, एंड जो आईवीज रहेगा ऑप्शंस के वो भी शूट अप करेंगे. सो जस्ट टू ऐड दैट जब भी आईवी शूट अप करते हैं तो प्रीमियम्स भी शूट अप करते हैं, एंड इन सर्टन केसेस जब भी प्रीमियम्स जस्ट बिफोर द इवेंट इफ यू डू दिस यूज दिस स्ट्रेटेजी, देन जब भी अगर आफ्टर द इवेंट देर इज अ केस कि आईवी बर्स्ट हो जाएगा, मतलब आईवी विल कूल डाउन और विक्स विल कूल डाउन, so at that time you will see a sharp drop in the premiums as well. So that is one of the best case scenario for our strategy jahan pe you will be getting the maximum profit as well. Can you just share the screen, and at what date the maximum profit was there? Can you just show that? It was on 29th, yes. Yeah, so this first Feb was basically the budget day, if you all remember. And so during the budget, generally the premiums in the option rises because of high volatility and high weeks as well. But जैसे ही अगर event खत्म होगा, you will be getting good premium decay in the options. आपका रिस्क जो है वो बहुत कम रहेगा, एंड जो आपको प्रॉफिट रहेगा that will be maximum on that day. तो यहाँ पे you can see the profits around 4900, 5000 rupees. But also there is the other side as well. Let's say अगर event आता है and let's say some minister or let's say RBI governor announce something which is not favorable. So at that time, you might see a sharp, like let's say on one in I guess last few days only RBI governor has increased the repo rate. So at that time, market had went down in one side. So at that time, there is a case जहाँ पे आपका premiums, जहाँ पे आपका option से that won't get exited even if the stop loss, because जो premiums रहते हैं options में वो भी burst होते हैं. Let's say 100 rupees का premium में 120 rupees चला जाएगा या 130 rupees चला जाएगा. तो I just want to ask AlgoBulls that उसका provision वगैरह क्या है, because Zerodha is not allowing the SLM order right now. तो उस केस में just I want to clarify this thing. yes, that has been taken care of in terms of the order type. तो आप stop loss डाल दिए तो then there shouldn't be a problem at all. There's one more question that if अगर आपका stop loss hit हो जाता है both the sides, क्या आपका strategy वापस re-enter करेगा? So we won't re-enter again. We will close for the day. Uh, because we can assume कि वो दिन हमारे लिए नहीं है, and instead of fighting back like वापस से over trade करके कुछ मतलब नहीं है. You will end up paying huge brokerages and all. So we will conclude our day at that time, and हम लोग next day वापस continue करेंगे. So generally in this situation, strategy would automatically stop. So is it okay if someone starts the strategy again? I would suggest not to start it, because जब भी आपका stop loss, let's say both side अगर stop loss hit हो रहा है, that means the market is very volatile, right? And let's say हमारा stop loss 12 बजे hit हो गया दोनों साइड पे, then if you enter again and if the market is again more volatile, then आपका second stop loss भी hit हो सकता है. So you're, instead of taking one time loss, you are taking twice. So आपका double loss हो जाएगा उस केस में. Understood. Understood. Is there a trailing stop loss in your strategy as well? Yeah, we are trailing stop loss as well, and it is being calculated with the latest premiums in the options. Great. The maximum drawdown is available on the strategy, which you can look at the risk capital risk on the strategy. If there are any more questions, yes, you guys can definitely add it on the chat. We'll be glad to answer them. So there is one question about ROI indicated is from inception, or if so, what would be the CAGR? The ROI is indicated from inception. CAGR can be calculated manually for the same. Mr. Yash, we'll wait for a few minutes if anyone has any more questions. Sure, sure.
Uh, there is one question from RS. Is there any technical failure during running trades, such as skipping stop loss, etc.? That wouldn't be the case if there is any kind of specific problem with the system. We definitely would notify you about the same. Yeah, and also one more thing to add. Before making it live on AlgoBulls, I have talked with their tech team and with the people in AlgoBulls as well. And जितना भी मैंने डिस्कशन किया है, everything was about the safety of the retailers. एंड जो भी रिस्क जो भी स्टॉप लॉस अगर हिट होता है या मिस होता है इन दैट केस, जैसे लास्ट ईयर देयर वाज द केस जहाँ पे कोई ऑप्शन जो 100 रुपीज़ का है वो 700,000 रुपीज़ चल जाता था, दैट इज द ग्लिचेस इन द सिस्टम. So after discussing everything, only we have taken care of the retail traders, and after that only the strategy is live on AlgoBulls. So this safety and feature is there in AlgoBulls. That's why we are associated with the AlgoBulls for this strategy. I will say yes. I don't think there are any more questions. So yes, thank you everyone for joining this webinar and participating in learning more and more about options. If you have any questions, you have any doubts, you can definitely get in touch with us. This is our website www.algobulls.com. You can contact our support number as well on the website. Our team will be glad to help you with anything that you need assistance about. You can also connect us on WhatsApp, or you can request for a call back as well, and our team will get in touch with you shortly. Thank you everyone for your time. Thank you, Mr. Yash Mehta, for explaining your strategy, and everyone have a wonderful day. Thank you, AlgoBulls. Thank you everyone, and have a nice day and enjoy your weekend.